So today we discuss Schroeder-Bernstien theorem. Schroeder-Bernstien theorem. Bernstein theorem. इक्विवेलेंट सेट्स न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट सेट्स वो हमने डिस्कस किए थे ना, सो उसको मैं अगेन यहाँ पर रिकॉल करूँगा डेफिनेशन. We see that two sets are numerically equivalent. So let x and y be sets, be two sets. We say that x is numerically equivalent. X is numerically equivalent to y if there is a bijection f from x to y, from x into y. So now I have state the theorem, statement of the theorem. So the proof, there are several proofs of this theorem, Schroeder-Bernstien theorem, but here we present a proof which is given by Birkhoff and MacLean. So the statement is, if we have two sets x and y, let x and y be two sets, let x and y be two sets, x and y be two sets. Okay, so these are two sets. If x is numerically equivalent to some subset of y and y is numerically equivalent to some subset of x, then x and y, they are also numerically equivalent. That's a statement. If x is numerically equivalent to some subset of y and y is numerically equivalent to some subset of x, then x is numerically equivalent to y. Proof. So we prove this theorem. This proof is given by Birkhoff and MacLean. And this is on JF Simmons. You can see this proof at page number 29. So this here x is numerically equivalent to y. That means we have a subset of y such that there is a bijection from x to that subset. So let A be a
subset of X and B and B be a subset of X, be a subset of Y, sorry, be a subset of Y, A be a subset of X and B be a subset of Y. And let's suppose that we have bijection, let F be a bijection from X to B because X is equivalent to some subset of Y. So let's take Y be that subset such that X is equivalent to Y, and G be a bijection from Y to A, Y to say subset of X, B bijections. So this is given. This is given X is equivalent to some subset of Y and Y is equivalent to some subset of X. So then F from X to Y is 1 to 1 and G from Y to X is 1 to 1. Okay, this is 1 to 1. So we have here X and here it's Y. Okay, so this is a bijection from some subset of, so this is B here, so this is bijection F from X to B, so that means F from X to Y is 1 1. Okay, so every element has unique preimage, but F from X to Y need not be a bijection, it's not on to in general. इसी तरह से आपके पास ये है, this is Y, this is your X, and there is a bijection from Y to subset of X, so that's a subset of X, that's our set A, and this is the bijection which is G. So clearly this G is 1 1 from Y to X, from Y to X. So suppose if this F is also onto, then we are done because F is 1 1. So if it's also 1 2, then there is a bijection from X to Y. So that means X and Y are numerically equivalent. Or if this G is onto, then G is also 1 1. If it's also onto, then its inverse G inverse will be a bijection from X to Y. So in that case again X and Y are numerically equivalent. So if this F is onto, then F from X to Y is a bijection, is a bijection, and hence X and Y are numerically equivalent. Or numerically equivalent. So we assume that, assume that this F is not onto. हम assume करेंगे कि ये F onto नहीं, क्योंकि अगर ये onto होगी उस केस में हमने result किया है F is, so we assume that this F is not onto. Again, if G which is from Y to X is onto 1 1 तो है ये is onto, then its inverse from X to Y is a bijection, is a bijection, and hence X and Y are numerically equivalent. So therefore we assume that this G is not onto, this G from Y to X is not onto.
सो हमें प्रूव करना है कि एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट. सो वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ मैप बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज अ बाइजेक्शन. तो वो बाइजेक्शन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ एफ एंड जी. We construct f from x to y such that f is a bijection. F is a so ये मैप हमें कंस्ट्रक्ट करनी है f which is a bijection. So again see this picture. This is our x and this is y. So f is from x to y, which is an injection, which is 1 1, and g is from y to x. So this f is not onto, so every element cannot have preimage. अगर आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी प्रीइमेज नहीं होगी इन जनरल बिकॉज इट इज नॉट ऑन टू. सिमिलरली अगर x यहाँ पर कोई एलिमेंट है, दिस g is not on to, so this element may not have preimage in general. So what do we have then? So given any x in x, either g inverse x exists या तो इसकी इनवर्स इमेज अंडर g एग्जिस्ट होगी. either this exists or g inverse x does not exist. does not exist. दो पॉसिबिलिटीज, या तो इसकी इनवर्स इमेज अंडर g, क्योंकि g ऑन टू नहीं है, हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी या हर किसी एलिमेंट की इनवर्स इमेज नहीं होगी. तो अगर होगी इसकी इनवर्स इमेज, उस केस में हम कहेंगे g इनवर्स x को इट इज कॉल्ड द एंसेस्टर ऑफ x. दिस g inverse x is called ancestor of x, first ancestor of x. x itself is called the zeroth ancestor of x. तो x आपने यहाँ पर एलिमेंट लिया है, ठीक है. अगर इसकी प्रीइमेज है, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स हो रहा है g इनवर्स x इस यहाँ पर y में, तो इस g इनवर्स x को हम कहेंगे इसका फर्स्ट एंसेस्टर. इसी तरह से अब f मैप है यहाँ से यहाँ तक है ना. अंडर f इसकी इनवर्स इमेज एक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. f इनवर्स g इनवर्स x ये एग्जिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर ये x होगा तब इस f इनवर्स g इनवर्स x को कहेंगे हम सेकंड एंसेस्टर ऑफ x. तो क्या हम x से स्टार्ट करेंगे, पहले x की इनवर्स इमेज यहाँ पर होगी, फिर अगर इसकी भी g इनवर्स x की भी इनवर्स इमेज होगी अंडर f नाउ बिकॉज f इज अ मैप फ्रॉम x to y. So then it will be called the second ancestor of x, and it is also called the first ancestor of g inverse x. Second x का हो गया, but first of g inverse x. So in this way we characterize the elements of x. हम x के elements को characterize करेंगे. We classify the elements of x into three categories here. First category, अगर ये जो x है, अगर इसके सपोज या तो इसका एक ही एंसेस्टर होगा g इनवर्स x, या इसके सपोज तीन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, थर्ड एंसेस्टर इसका हो सकता है, ये थर्ड एंसेस्टर पर खत्म होगा, या अगर फर्स्ट एंसेस्टर पर ही खत्म होगा, इसका आगे से एंसेस्टर f इनवर्स g इनवर्स x नहीं होगा. इसका मतलब है कि इसका एक ही एंसेस्टर है. या इसके सपोज तीन एंसेस्टर्स होगी, लाइक ये वापस आ जाएगा, फिर अब जी इनवर्स एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, तो इसकी तीन एंसेस्टर्स हो सकती है, या 5 या 7 है. तो मतलब इसके ऑड नंबर ऑफ एंसेस्टर्स अगर होगी, होगा नहीं ऑड नंबर. तो ऑड नंबर का होने का मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट एंसेस्टर जी इनवर्स एक्स का, तो ये वाई में खत्म होता है. फिर जब सेकंड एंसेस्टर आ जाएगा वो एक्स में आ जाएगा वापस. फिर जब थर्ड आप लोगे तो वो वापस वाई में आ जाएगा यहाँ. तो इसका मतलब है कि अगर इस x के ऑड एंसेस्टर होंगे तो इसका जो लास्ट एंसेस्टर होगा वो y में होगा. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x के इवन एंसेस्टर्स होंगे, मतलब इसके या तो दो एंसेस्टर होंगे, जैसे यहाँ पर है x, इसका फर्स्ट एंसेस्टर जी इनवर्स x है, सेकंड है f इनवर्स जी इनवर्स x. अगर ये भी x होगा उस केस में इसके दो एंसेस्टर्स है, या फिर आप आगे जाओगे थर्ड पर, फिर वापस 4 पर आ जाओगे आप, तो उस केस में इसके 4 एंसेस्टर्स होंगे. तो इसके सपोज इवन नंबर ऑफ एंसेस्टर्स होंगे.
इवन नंबर ऑफ एंसेस्टर, तो इसका जो लास्ट एंसेस्टर होगा देन इट विल बी एन एक्स। या ये जो एंसेस्टर आप निकालते हो ना फर्स्ट सेकंड, ये खत्म ही नहीं होगा, आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को करोगे किसी एक्स के लिए। आप पहले फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फाइव देन सिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ दिस प्रोसेस विल नेवर टर्मिनेट फॉर सम पर्टिकुलर एक्स, तब उस केस में हम कहेंगे एक्स के इन्फिनाइटली मनी एंसेस्टर्स है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एक्स का कोई एंसेस्टर हो भी नहीं सकता है, कि उस केस में इसका जीरो एंसेस्टर दैट्स ट्रीटेड एज इवन एंसेस्टर। या ये भी हो सकता है कि इसका फर्स्ट एंसेस्टर तो है जी इनवर्स एक्स, मगर इसकी अब इनवर्स इमेज एक्स नहीं हो रही, तो उस केस में इसका एक ही एंसेस्टर दैट्स ऑड एंसेस्टर। या अगर फर्स्ट इसका भी इनवर्स, इसकी इनवर्स इमेज एक्स होगी, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, फिर एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स की भी इनवर्स इमेज एक्स होगी, उस केस में इसके तीन एंसेस्टर्स है, थर्ड एंसेस्टर। So in this way we classify the elements of x. In a similar way we classify the elements of y. अब हम y के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसकी अगर इनवर्स इमेज अंडर एफ एक्स टू होगी y पर, तो उस केस में हम कहेंगे इसका फर्स्ट एंसेस्टर है। तो इसको में हम ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस वर्टिकल लाइन हम लेंगे, ये सपोज x है, ये सपोज y है, यहाँ पर ये एलिमेंट x है, सपोज इसका ये एलिमेंट x1 है, इसका सपोज फर्स्ट एंसेस्टर x2 हो रहा है, दिस इज योर जी इनवर्स x, ओके, जी इनवर्स मैप है ये, जी इनवर्स इज अ मैपिंग फ्रॉम x to y बिकॉज जी इज अ मैप फ्रॉम y to x। तो इसका सपोज ये फर्स्ट एंसेस्टर दैट्स जी इनवर्स x1। या कुछ एलिमेंट्स ऐसे है से x2, इसकी इनवर्स इमेज x2 हो ही नहीं रही, सो इसका ये जीरो एंसेस्टर। या कोई एलिमेंट ऐसे है जिसके सपोज तीन एंसेस्टर, उससे x3, तो सपोज इसका फर्स्ट एंसेस्टर ये है, दिस इज जी इनवर्स, ये है जी इनवर्स x3, फिर इसका सेकंड एंसेस्टर यहाँ पर है कोई, दिस इज योर f इनवर्स। So here f is a map, okay, this is a map, and here this is the map G, okay, this is the map G. So this is here f inverse, you apply f inverse on G inverse x3, it will be here now f inverse G inverse x3, okay। तो फिर आगे और एक एंसेस्टर x2 हो रहा है, like this, now it's now G inverse, so this is G inverse f inverse G inverse x3, so this is the third ancestor of x3। x2 का कोई एंसेस्टर है नहीं, इसकी प्री इमेज है ही नहीं, x1 का सिर्फ एक ही एंसेस्टर है। अब कोई एलिमेंट ऐसा भी हो जिसके दो एंसेस्टर्स होंगे, सपोज मैं यहाँ पर x4 लूँगा, ये इसका फर्स्ट एंसेस्टर है और इसका कोई सेकंड एंसेस्टर यहाँ पर है, ठीक है, ये फर्स्ट एंसेस्टर, दिस इज योर G inverse, this is your F inverse here, so this one it's G inverse x4, and now this one, this is F inverse G inverse x4, so ये इसका सेकंड है, ये यहाँ पर ये खत्म, इसके बाद इसकी इनवर्स इमेज अंडर G एक्सटेंड नहीं हो रही है। So given any x, we have three possibilities: either this x have infinitely many ancestors, or it has a even number of ancestors, or odd number of ancestors, right? Okay, so clearly this F inverse, or you can say G inverse. What's G inverse? G inverse, it's a mapping from f of x to y, okay, not is it from, no, so it's a mapping from y to where, it's a mapping from this okay, x to y. G is a mapping, G is a mapping from y to x, so G is a mapping from y to x, so G inverse will be from G inverse जो होगी ना G, it will be from G of x, okay,
g of x to y, not from y to x to y. Okay, so this is G inverse. And what's F inverse? F inverse from, so it's 1 minute, it's from x to y to x to G hai y to, it's from G of y, sorry, G of y, okay, G of y to x. And F inverse from it's from f of x to x. So what's the g of y? G of y, it's obviously it's a subset of x. Clearly these mappings exist. These are the mappings. Clearly f G inverse is a mapping from this to this, and where obviously this thing holds. G of y is subset of x, and f of x is subset of y. Now if you choose any element from x, G inverse x may exist or may not exist in general. G inverse it may exist or may not exist. Okay, so given x belongs to x, G inverse x may exist or may not exist. If G inverse x exists, we call it the first ancestor of x, and x itself called the zeroth ancestor of x. Now this G inverse x, x अगर x में होगा, G inverse x, it may exist or may not exist. Now where is this G inverse x? G inverse it's a sub element of y. Now G inverse x, it belongs to y. Okay, it's not in G of y. अगर G of y में होता, it's in y, it's in y, but it's not in f of x. F of x is a subset of y, so it's in y. So and f inverse is a map from fx to x, it's not a map from y to x. तो अगर ये y to x होती है उस केस में अब इसकी इनवर्स, इसकी इमेज अंडर f inverse x होती है G inverse x की, but G inverse x, it's an element of y, it's not an element of f of x. So f inverse of G inverse x, it may exist or may not exist. So if f inverse G inverse of x exists, we call it the third ancestor, second, sorry, we call it the second ancestor, we call it the second ancestor of x. Now again this element, ये जो element होगा f inverse G inverse x, या अब किसका मेंबर, ये x का मेंबर, क्योंकि f inverse आपने इस पर अप्लाई किया, f inverse G inverse x, या यहाँ पर देखिए f inverse, it's a map from fx to y, so it's an element in y. Again this element again belongs to x. So now if this is an element of x, and G inverse is a map from the subset of x to y, G of y is it's not whole x, so G inverse of f inverse G inverse x, it may exist or may not exist. In case it exists, if G inverse f inverse G inverse of x, if this element exists,
we call it the third ancestor of x. By continuing likewise, by हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करिए, by continuing likewise, what we do, we characterize the elements of x into three disjoint sets, by if we, so we have the following possibilities. We have the following possibilities. अगर हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप की पॉसिबिलिटीज आ जाएगी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? x हैज इन्फिनिटली मनी एंसेस्टर्स, मतलब कि ये जो एंसेस्टर्स प्रोसेस आप करिए कभी खत्म ही नहीं होगी. कुछ एक्सेस ऐसे भी होगी. x हैज infinitely many ancestors. That's first. अब वो जो एलिमेंट्स होंगे जिनकी ये पॉसिबिलिटीज होगी वो x के एलिमेंट्स होगी ना, मतलब वो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा वो x का सबसेट होगा. उस सबसेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? xi, x सबस्क्रिप्ट i, राइट. सो वी डिनोट बाय xi, we denote by xi. The subset of x, it is the subset of x which consisting of all elements which consisting of all elements with infinitely many ancestors. With infinitely many, मतलब इसका लास्ट एंसेस्टर होगा ही नहीं कोई, ये कंटिन्यू एंसेस्टर्स. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? x हैज इवन नंबर ऑफ एंसेस्टर्स. इसमें जीरो भी कवर होगा. अगर इसका कोई एंसेस्टर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसका ये जीरो एंसेस्टर x itself, which is even. x has even number of ancestors. So this means that x has lost ancestor. This means that the lost ancestor of x lies in x. वो x में होगा क्योंकि इसका फर्स्ट एंसेस्टर y में होता है ना. x का एलिमेंट है ना ये, तो जी यूनिवर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंसेस्टर जो होगा वो y में, फिर सेकंड किस में होगा? वो वापस x में आ जाएगा. फिर थर्ड अगेन वो y में होगा. फिर फोर्थ क्या होगा? तो इवन नंबर ऑफ एंसेस्टर मतलब हो गया या तो इसके दो एंसेस्टर्स हो गए या चार हो गए या 6 हो गए. तो जितने भी हो गए इवन नंबर्स, हमेशा जो इसका लास्ट एंसेस्टर होगा वो x का मेंबर होगा. दैट एलिमेंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ x. तो अगर कोई एंसेस्टर नहीं होगा तो लास्ट एंसेस्टर ये x खुद ही है, उस केस में भी ये x में ही है. ओके, सो वी डिनोट बाय XE. अब हम ये सेट कैसे डिनोट करेंगे जिनके इवन एंसेस्टर्स हो गए? वी डिनोट बाय XE the subset of x. It is the subset of x. x का सबसेट है consisting of all elements of x, consisting of all x के वो सारे elements, all elements of x with an even number of ancestors, with an even number of
ancestors. Now third one, x has odd number of ancestors. ऐसी एक्सेस भी होगी जिनके odd number of ancestors होगी, odd number of ancestors, okay. Odd number of ancestors. This means that the last ancestor of x lies in y, क्योंकि फर्स्ट एंसेस्टर y में होगा, सेकंड फिर वापस x में आ जाएगा, फिर थर्ड y में आ जाएगा. दिस means that the lost ancestor of x lies in y. We denote by xo, okay, यहाँ पर xo notation use करेंगे. We denote by xo, x order, xo, the subset of x, the subset of x, ये x का subset होगा, consisting of all elements of x, x के वो सारे elements with an odd number of, with an odd number of ancestors. Okay, so then clearly this holds, clearly our x is the union of these three sets, xi, xe, xo. अब यही प्रोसेस हम y के एलिमेंट्स के लिए करेंगे. वहाँ पर जो फर्स्ट आंसर होगा वो वाया एफ इनवर्स आ जाएगा, एफ इनवर्स के जरिए आ जाएगा वो एलिमेंट. मतलब अगर y में कोई एलिमेंट y आप लोगे, आप एफ इनवर्स y में और मे नॉट एक्स, अगर वो एक्स होगा देन इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ y. तो उस केस में भी आप क्या करोगे, we can express y as a union of these three sets, y I, y e, y o. So we decompose x in this, we decompose y in the same way. We decompose y in the same way. हम इसी तरह से y को भी decompose in the same way into three subsets, yi, ye, yo. That is, this y, it's equal to yi union, ye union, yo. So one thing is clear, that it's clear that it is clear that f maps xi onto yi. xi की इमेज जो होगी वो हमेशा yi में होगी, और xe की इमेज जो होगी वो yo में होगी, एंड xo की जो इमेज होगी xe maps onto, okay, maps onto yo, and xo maps onto ye. तो इसका रीजन क्या है, ये सपोज आपका x है, दिस इज योर y, ओके. सपोज ये एलिमेंट इसके इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर्स होगी, तो इसकी जो इमेज होगी यहाँ पर अंडर f से वो f ऑफ x होगी, और इसके कितने एंसेस्टर्स हैं, इन्फिनिटी मनी. मतलब ये एंसेस्टर्स की जो प्रोसेस है ना, दिस इज योर f के, ये f अप्लाई हो रहा है, और रिवर्स में हो रहा है g अप्लाई के, g इनवर्स. इसके इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर्स है, ओके. दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप्स. अब ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x के कितने एंसेस्टर्स, ओके. डज इट हैव फाइनाइट और इट आल्सो हैव इन्फिनिटली मनी एंसेस्टर्स. f of x.
तो f(x) का फर्स्ट एंसेस्टर क्या है? f इनवर्स ऑफ f(x), क्योंकि आप y का एलिमेंट आप ले रहे हो ना, इसका फर्स्ट दैट्स x, इसका ये फर्स्ट एंसेस्टर है x, मगर x के खुद कितने एंसेस्टर्स है? इन्फिनिटी मनी। इसका मतलब है कि f(x) के भी इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर्स होगी। सो दैट मीन व्हेनेवर x बिलोंग्स टू xi, देन इट्स इमेज f(x) इट मस्ट लाइज इन yi। इस f(x) के इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर्स होगी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एंसेस्टर है वो x खुद है under f inverse, because f(x) is the image of x under f, so its inverse image under f inverse will be x. तो x इसका फर्स्ट एंसेस्टर है और x के खुद कितने एंसेस्टर्स हैं? इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर। दैट मींस f(x) also possess infinity many ancestors. So that means whenever x is in xi, f(x) must be in yi. So that means f maps xi onto y. इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इसमें ये दिस योर x, दिस योर y, यहाँ पर कोई एलिमेंट x है, वो सपोज xe में है, सी xe में x है, इसके इवन एंसेस्टर्स है। अब मुझे चेक करना कि इसकी इमेज जो होगी ना f(x), उसके कितने एंसेस्टर्स होगी। एक पॉसिबिलिटी ये है, देखिए x के कितने एंसेस्टर्स है? इवन एंसेस्टर। इसका मतलब है ये भी पॉसिबिलिटी है कि x का कोई एंसेस्टर होगा ही नहीं, मतलब जीनूस x एग्जिस्ट ही नहीं होगा। उस केस में देखिए f(x) के कितने एंसेस्टर्स होगी। f(x) मतलब आपको इस पर f इनवर्स अप्लाई करना है, तो इसका मतलब है इसका ये x तो एंसेस्टर है ही, मगर x का खुद कोई एंसेस्टर है ही नहीं। इसका मतलब है कि इस केस में f(x) का एक ही एंसेस्टर है, अगर x का कोई एंसेस्टर है ही नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी, सपोज x के, क्योंकि इवन है ना, सपोज इसके दो एंसेस्टर, ये इसका फर्स्ट एंसेस्टर है, ये इसका सेकंड एंसेस्टर है, तो उस केस में f(x) के कितने हैं? इसके देखिए, इसके एक तो x खुद है ही f(x) का, देन दिस एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट। उस केस में f(x) के तीन एंसेस्टर्स। तो अगर x के दो है, f(x) के तीन एंसेस्टर्स है, सो दैट मीन्स whenever x is in xe, that means it has even number of ancestors, then it implies that f(x) it belongs to yo, it has an odd number of ancestors. इसी तरह से अगर x के odd ancestors हो गए तो f(x) के even, क्योंकि एक्चुअली एक ऐड हो रहा है। अगर मैं इमेज लेंगे ना एक एंसेस्टर, क्योंकि अब आपको वापस आना है ना, ये इसका फर्स्ट एंसेस्टर बन जाएगा, f(x) का ये फर्स्ट एंसेस्टर बन जाएगा, f इनवर्स ये जो x है ना। So that means this it's clear that f maps xi onto yi, x maps onto y naught, and x naught maps onto y e. Okay, now we define a map. जो हमने पहले ही कहा था आपको, हमें मैप डिफाइन करनी है, which is a bijection between x and y. So define f. From x to y by the rule, how do we define it? F of x is equal to, इसकी इमेज में f(x) ही लूँगा अगर x के या तो इन्फिनिटी मनी एंसेस्टर्स होंगे या इवन होगी, और अगर इसके ऑड एंसेस्टर्स होंगे, इसका मतलब है कि जीनूस x एग्जिस्ट होगा, उस केस में मैं इसकी इमेज जीनूस x ही लूँगा। अगर x के ऑड एंसेस्टर्स, मतलब इसका फर्स्ट एंसेस्टर तो होगा ही एग्जिस्ट एटलीस्ट, क्योंकि ऑड है, या तो एक है या तीन है या 5 एंसेस्टर्स है, तो कहने का मतलब है कि कम से कम फर्स्ट एंसेस्टर है, जीनूस x एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर x O में है, मतलब इसके ऑड एंसेस्टर्स हैं, आई विल टेक f(x) कैपिटल f(x) एज जीनूस x, एंड आई विल प्रूव दिस मैप। ये जो हमने f डिफाइन किया कैपिटल F, दिस मैप इज अ बाइजेक्शन, दिस मैप इज अ बाइजेक्शन। So we show that this f is a bijection. F is a bijection. So let's first prove that this f is 1 1.
can say injective. So for this I choose two elements from X, capital X. Let's choose two elements, any two elements. X1, X2 belongs to capital X such that their images are equal. I need to show that X1 must be equal to X2. So X1 और X2 ये X में है, मतलब ये कि ये उन तीन सेट्स में है, XI, XO, XE. तो फर्स्ट केस अगर ये दोनों एलिमेंट्स सपोज इस यूनियन में होगी, दोनों एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट केस में लूंगा इफ X1 X2 belongs to XI union XE, सपोज दोनों यूनियन में है, then what's capital F of Xn by definition? It is small f of Xn. And what's capital F of X2? It is small f of X2. So this means since capital F of X1 is same as f of X2, that means this there must be equal. But f is given to be 1 1, which means that X1 is equal to X2. अब सेकंड केस ये है कि अगर एक तो इसमें है मगर दूसरा इससे बाहर है, दूसरे के ऑड एंड सिस्टर से. सेकंड केस, नाउ इफ X1 belongs to XI union XE and X2 it belongs to say XO, then आपका जो f of X1 है that's equal to what? F of X by definition, and f of X2 is equal to what? It's G inverse X, right? By definition, so this means but f of X is same, f of X1 is same as f of X2, so that means small f of X1 is equal to G inverse X2. अब आप देखिए X1 के कितने एंसेस्टर्स है. X1 ये कहाँ पर बिलोंग करता है, मैं इसको यहाँ पूरा लिख दूंगा. since X1 belongs to XI union XE, okay, so this means X1 has either infinitely many ancestors, or so या हम डायरेक्टली उस पार्ट का यूज करेंगे. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट f ऑफ x1, अगर देखिए अगर x1 xi में है तो इसकी इमेज yi में होती है, और अगर x1 xe में है इवन इसकी इमेज जो है उसके और एंसेस्टर्स y में होते हैं. सो दैट मीन्स f ऑफ x1 इट बिलोंग्स टू yi यूनियन yo. So also since this element x2 it's where it's in xo, इसके odd ancestors है. इसके कितने ancestors है? Odd ancestors. अब यहाँ पर देखिए, this is x, this is y, ये x2 है, इसके odd ancestors है, तो इसका first ancestor जो है that's G inverse x2, ये इसका first. इसके बाद इसके या तो एक ही एंसेस्टर है या इसके तीन एंसेस्टर्स है, मतलब ये अगर यहाँ जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है, फिर तीन एंसेस्टर्स इसके हैं, ठीक है. सो मतलब इसका लास्ट एंसेस्टर जो है वो y में होगा, ऑड है. तो अब मुझे ये बताइए x2 तो है, इसके जो ऑड एंसेस्टर G इनवर्स x2 के कितने एंसेस्टर्स हो सकते हैं? देखिए यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे, इसके जब आप x2 से स्टार्ट करोगे, इसका फर्स्ट एंसेस्टर G इनवर्स x2 है, तो इसको जब आप काउंट करोगे यहाँ से आपके आगे आ जाएगी ऑड नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, इधर 1 या तो यहाँ ही खत्म होगा G इनवर्स x2 पर, आगे कंटिन्यू होगा तो इसके या तो 3 हो गए या 5 एंसेस्टर्स हो गए. माय क्वेश्चन इज दैट G इनवर्स x2 के कितने एंसेस्टर्स हो गए? यस, this is G inverse, this is F inverse, again you have applied G inverse. तो G inverse सपोज अगर x2 के 3 एंसेस्टर्स है, एक इसका ये है G inverse x2, फिर इसका सेकंड यहाँ से है F inverse G inverse x2, फिर इसका ये थर्ड है G inverse
F inverse G inverse x2. So my question is that if x2 has three ancestors, only these three, G inverse x2, then F inverse G inverse x2, then G inverse F inverse G inverse x2, तो G inverse x2 के कितने ancestors है? Yes. So you can see this G inverse x2 has only two ancestors. So first is the F inverse G inverse x2, second is G inverse F inverse G inverse of x2. So that means so therefore this G inverse x2, it has even number of ancestors. It has even number. So it's in YE. But f of x1 is in yi union yo. So and they are equal, which is a contradiction. So they cannot be equal because f of x1, it's either in yi or in yo. But G inverse x2, it is in ye. So these two elements cannot be equal, which is a contradiction. Which is a contradiction. So case third, if both x1 x2 both are in where, both are in say xo, अगर दोनों xo में होगी, ये हमने चेक किया, अगर एक उस यूनियन में होगा दूसरा xo में होगा, which is a plain contradiction, so that case does not hold. So this is the last case, अगर ये दोनों xo में होंगे, उस केस में f of x1 जो होगा वो G inverse x1 होगा, and f of x2 जो होगा वो G inverse of x2 होगा. But f of x1 is same as f of x2. This means that G inverse x1 is same as G inverse x2. Now G is a map, you can apply G on both sides. So this gives x1 is equal to x2. So hence this f is 1 1. f on to वो आपके लिए assignment है. f is on to, that is an home assignment. So thus this f from x to y is a bijection, is a bijection, and hence x and y are numerically equivalent. They are numerically equivalent.